Hello students, now we are going to see some question answers. So here are 5 important questions. Just go through them and try to answer them one by one. So here comes the first question, like why is sodium kept immersed in kerosene oil? ये हमने अभी previous lectures में देखा था. अगर आपने lectures नहीं attend किए तो then just go to the playlist और आप previous lectures attend करिए, right? So sodium is a highly reactive metal, especially with oxygen and moisture in the air. So if exposed, it can react violently. It will form sodium hydroxide and hydrogen gas, which can ignite. Okay. So to prevent this reaction and ensure safe storage, it's kept immersed in kerosene oil. Kerosene is a non-reactive substance that prevents sodium from coming into contact with air and moisture. So any kind of fire is saved here, right? So second question is we have to write the equations for these reactions. First is iron with steam. So this is basically metal plus water, right? So Fe plus H2O will give you Fe3O4 and hydrogen gases released, right? Now your second equation is calcium and potassium with water. Again we have metal plus water. So calcium plus water gives CaOH whole twice and hydrogen gas is released. And for potassium, KOH is formed and hydrogen gas is released, right? So here comes the next question. This is very conceptual question. जो आपका displacement reaction और activity series को लेकर सभी concepts को clear करेगा, right? So we are taking 4 samples of metals A, B, C and D, alright, and we added to the following solution one by one. ठीक है, जैसे आपने metal A लिया, आपने उसे आयरन सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करा और उसमें जो ऑब्जर्वेशन आई वो आपने यहाँ पे टैबुलेट की. ओके, so using this table we have to answer some of these questions related to, like, first is which is the most reactive metal, then what do you observe when B is added to copper sulfate, and arranging and decreasing reactivity. All these we have to do, right? So first of all, let's try to understand the table, what table is trying to say. Okay, so we see metal A is not showing any reaction with iron sulfate. ठीक है, तो that means जो metal A है वो iron से कम reactive है. ओके, आयरन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा आयरन सल्फेट में से. करेक्ट. एंड विद कॉपर सल्फेट जब ए रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट होती है. दैट मीन्स ए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, राइट, ताकि वो उसे डिस्प्लेस कर पाए. अब अगर हम बी मेटल देखें तो बी मेटल आयरन सल्फेट से रिएक्ट करने पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. दैट मीन्स इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन. ओके, तो अगर हम ए और बी में अब कंपेयर करेंगे तो बी इज मोर रिएक्टिव क्योंकि बी ने आयरन आयरन को भी डिस्प्लेस कर लिया, बट ए वाज नॉट एबल टू डिस्प्लेस आयरन, राइट. अब आप आगे देखो इसी टेबल में जिंक सल्फेट के साथ बी नो रिएक्शन दिखाता है. दैट मीन्स बी इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक क्योंकि वो जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, राइट. देन वी हैव मेटल सी. सी आयरन, कॉपर और जिंक से लेस रिएक्टिव है बट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है. ऑलराइट. एंड डी में देखो किसी में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो इट इज लीस्ट रिएक्टिव. ओके, किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. अगर हम ए बी सी डी में कंपेयर करें तो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है. सो यूजिंग दिस टेबल हम यही देख रहे हैं कि बी ने इसको डिस्प्लेस करा है आयरन को. सो बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन ऑल्सो, सो द आंसर वुड बी बी हियर. ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज बी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate. तो B को हम यहाँ ऐड करते हैं अगर, तो क्या होगा. अब वो आयरन के साथ भी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तो ऑब्वियसली कॉपर के साथ भी वो हमें डिस्प्लेसमेंट ही शो करेगा क्योंकि वो अगर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव तो है ही, राइट. नेक्स्ट इज अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी.
सो हाईएस्ट रिएक्टिव हमारा कौन सा था? हाईएस्ट रिएक्टिव इज बी। उसके बाद कौन सा आएगा? देन ए विल कम, क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। ठीक है, जो हमारा सी है वो कॉपर को नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा, वो सिल्वर नाइट्रेट में डिस्प्लेसमेंट शो करता है। सो देन सी विल कम। ओके, एंड योर लीस्ट रिएक्टिव इज डी, क्योंकि वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। सो दिस इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट? So now let's see the fourth question. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? So ये जो हमारा रिएक्शन है वो है मेटल प्लस एसिड वाला। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड में कौन सी गैस रिलीज होती है? यू नो, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. Okay, so you have to write a reaction when iron reacts with dilute H2SO4. Okay, so iron Fe reacts with H2SO4, it will give FeSO4 plus H2. So hydrogen will be released, right? Last question is, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? ठीक है, जिंक आपने ऐड किया Zn2FeSO4, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, सो ZnSO4 plus Fe will be formed. Correct? Thank you so much for watching the lecture, and do subscribe the channel to get regular updates. Thank you.